From this tradition of synthesis, we take you now to the shores of Madras for an encounter with the rebel dancer choreographer, Chandralekha. Mantratmane Sauvarna Swarupatmane Bharatija Hariharatmane Bhuti Murti Visaranatmane Surya सूर्य को नमस्कार। विद्रोही नृत्यांगना चंद्रलेखा की ये मुद्रा नवग्रह नृत्य का एक अंश है। मुथुस्वामी दीक्षितर की नवग्रह कृति पर आधारित चंद्रलेखा ने इसका संयोजन किया था 1972 में और यहीं से शुरू हुआ भरतनाट्यम की अमूर्त और ग्राफिक शक्ति के साथ एक अद्भुत रचनात्मक प्रयोग। लेकिन अपने गुरु कांचीपुरम येलप्पा पिल्लई से मिली परंपरावादी शिक्षा से हटकर नृत्य के नए मुहावरों की खोज क्या चंद्रलेखा के सामने एक चुनौती नहीं थी? Yeah, I learned from the masters, so the great masters. चंद्रलेखा कहती है, मैंने महान गुरुओं से परंपरागत नृत्य शैली सीखी थी, लेकिन मेरे और गुरुओं की सोच और जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क था। What you call? But already there was a tremendous difference between the way the gurus thought and the way I thought, the way they lived their life and the way I lived my life. So already there is a tremendous difference in our consciousness. And any art, if we want to keep it alive, it has to relate to time, space. It's a product of time, space. कोई भी कला जब तक आज के समय और समाज से नहीं जुड़ती, तब तक मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं। So I don't think that traditions are for museums, or they can be fossilized, or they can be just kept as some kind of objects of art to be as glittering objects. I feel that traditions have to be tested in the light of the sun. You have to hold them up against the sun. And परंपरा सिर्फ संग्रहालय की चीज नहीं, परंपरा को सूरज की तीखी धूप में रखकर जांचना चाहिए। When I thought of Bharatanatyam form, I like Bharatanatyam form. It has terrific energy. It has power. It has conceptually it is so strong. It tells you that your body is the center of your world. भरतनाट्यम में मुझे ऊर्जा और शक्ति की अद्भुत संभावनाएं दिखाई पड़ी। जब आप कला के खोजी बनते हैं, तो आपके सामने एक बिल्कुल नया संसार खुलने लगता है। This sort of excitement about learning something new. You are a student, you are a seeker, and the world opens up for you when you are a seeker. नृत्य सीखने के बाद बार बार आप सीखे हुए नृत्य को ही दोहराते हैं, लेकिन मैं हमेशा उसी एकल भरतनाट्यम को नहीं दोहरा सकती। The excitement of learning was there, but once you learn, then what do you do with it? You can go on refining it, okay. You can go on perfecting it, okay. I couldn't go on dancing the same solo Bharatanatyam dance forever. That was for sure that I had to stop. I had to reflect. And I refused to be mechanized in life by anything. अगर कोई नृत्य आपको यंत्र बना दे, तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। I never wanted my one day to be mechanized as any other day. And that is, I think all my life I have sought very consciously that kind of as a way of life.
dance Radha and Krishna. अब कृष्ण की माखन चोरी को ही लीजिए। मैंने सोचा भला इस नृत्य प्रसंग का मुझसे क्या रिश्ता, एक निरर्थक चीज। इसलिए मैंने ऐसी तमाम प्रस्तुतियों से दूरी बनाई। I began to see the whole idiocy of it in terms of my own life. That what does that butter sequence mean to me? It just doesn't mean a thing to me. In fact, it looked so ridiculous that every time I had to dance that piece where Gopika and Radha are churning the butter and taking out the butter and then putting it in a pot, and you put it, the pot high up, and then Krishna comes and then he lifts up the butter and all that. I thought the whole thing it had nothing to do with me. It was mindlessness to reproduce that kind of a thing as art. And if dance was going to mechanize you, then it wasn't for me. I had to distance myself and see its meaning. नवग्रह के बाद 12 साल तक चंद्रलेखा प्रदर्शन से दूर रहीं। भरतनाट्यम की ऊर्जा से जूझते हुए 1985 में जब वे अंगिका के साथ मंच पर आईं, तो एक तूफान आ गया। कलरी पायट जैसे मार्शल आर्ट और योगाभ्यास के तत्वों को मिलाकर उन्होंने भरतनाट्यम की भाषा बदल दी। So I needed that distance for reflection, and so when I came back again to dance, I started right from the beginning. जब मैं दोबारा लौटी तो मैंने शुरू से शुरुआत की। नृत्य की संरचना, उसके व्याकरण, उसके सिद्धांत और उसकी ऊर्जा को तलाशा। These were the dance exercises, or these were called the grammar of dance, or these were called the theories of dance. I began to see the circuits of energy in those areas, and I began to see the meaning. Today, if some kind of a recognition has come to me, it is not sudden kind of a drop from heaven. It has been a result of almost 30 years of day-to-day struggle. और ये 30 साल के दिन रात के संघर्ष का नृत्य है। सिर्फ नृत्य नहीं, मूल्यों, जीवन, अनुभवों और इर्द गिर्द फैले यथार्थ की प्रस्तुति। But basically all the time trying to find values, your concerns for what's happening around you, what's happening to you, what's happening to the body. It's not just dance, but to the whole immediate world around you, what's happening all around you. And these concerns, somehow they come together and coalesce in your work. So 84 onwards, I began to, it has been a continuous work, several productions, 5 productions, in which this quest has been continuous, ongoing kind of work. The first work was Angika, about the body, about rejection of cosmetic content, rejection of religious god-goddess content, and exploring how Natya Shastra sees the body and relating it to other physical disciplines like martial arts. What are the principles? The principles learned from nature, from animals, from birds and animals, and principles learned in various physical disciplines. 1984 के बाद की 5 प्रस्तुतियों में मेरी तलाश जारी रही। नृत्य से आडंबर व दैवी प्रसंगों को तिलांजलि। नाट्य शास्त्र देह के बारे में जो कहता है, उसे प्रकृति, योग और युद्ध कला के सिद्धांतों से जोड़ना। अंगिका एक ऐसी ही शुरुआत थी। In the next work, Namaskar, which you will see, again, it's the potential of the body. What is the power of the body? What is the dignity of body? Is Namaskar just a genuflection? You dive at somebody's feet and you just go limp. मेरी अगली प्रस्तुति नमस्कार। नमस्कार क्या किसी के सामने झुक जाने का नाम है? नहीं, ये दिल की गरिमा, स्वाभिमान, शक्ति और ऊर्जा की एक समग्र मुद्रा है। Limbs will show the dignity. What is the dignity of the body? And that's what I tried to explore in this concept of Namaskar.
Lilavati, it was a poetic concept. You take a text like mathematics text, and how do you relate it to dance? लीलावती प्रस्तुति काव्यात्मक थी। nature and आप all that. गणित को प्रकृति, जीवन, खुशी और खेल से कैसे जोड़ेंगे? In the next work, Prana and Sri, again it's the quest for spine, and the loss of spine. Spine becomes the metaphor for freedom in this work, and how the loss of spine and the reclamation of spine can be a theme, can be a quest, a search, and through that you go to areas like self-respect, identity, dignity. प्राण और श्री ऐसी रचनाएं हैं जो खोई हुई रीढ़ की खोज करती हैं। यहाँ रीढ़ स्वतंत्रता और स्वाभिमान का रूपक बन जाती है। स्वाभिमान और अस्मिता को खोने और पाने का नृत्य। चंद्रलेखा ने अपनी अलग शैली के साथ परंपरा से जो प्रस्थान किया, उससे नृत्य से जुड़े कई लोगों की भवें तन गईं। वर्षों के संघर्ष के बाद चंद्रलेखा ने सही अर्थों में नए समकालीन नृत्य नाटक की नींव डाली। मिथकों से दूर सामाजिक संदर्भों की खोज और नृत्य को एक जागरूक ऐतिहासिक आयाम देने की कोशिश। I believe in working with a group, making relationships. I do not like to have power over people. लोग मेरे पैर छुए मुझे नापसंद है। गुरु बनकर मैं रोक गांठना नहीं चाहती। संस्थाएं खड़ी करने में मेरा कोई विश्वास नहीं। Diving at my feet, for example. I have no illusion about making institutions in this country. जनता के प्रति इन संस्थाओं को लगातार तोड़ते रहना होगा। Some kind of a bureaucratic power to establish that kind of a thing, because I feel that finally we have to go on breaking those institutions because they come to seed. They all become so decadent, and I would say that my statement to this kind of a cultural bureaucracy who never moved a little finger, never did any kind of help for me, my statement to them has been, I exist in spite of you. And I feel that artist needs to have that kind of a dignity. सांस्कृतिक नौकरशाही से मुझे सिर्फ ये कहना है, मैं हूँ तुम्हारे बावजूद। और चंद्रलेखा की रचनात्मक तलाश जारी है। नृत्य को उसकी खोई हुई रीढ़ और नई सांस देने की तलाश।